Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Do you want to know some of your favorite celebrities' first audition experiences? Have a look. First audition. My first audition, my Abba took me to my first audition because we got to know from somewhere कि एक audition चल रहा है for an ad for Seat tires, and my Abba took me there because I was very nervous to go myself. और काफ़ी लंबी लाइन थी और मैं बहुत डर गया था देखकर. मैं बहुत छोटा सा था, कॉलेज से जस्ट बंक करके आया था और I got the ad. First audition was for Pepsi in 2013 July. I don't remember it. 2010 I guess. For what? क्या मस्त लाइफ? My first audition मैंने ये दिल्ली में कहीं पे दिया था because I was really young. मुझे इतना याद नहीं, बहुत छोटी सी थी. हाँ, दिल्ली में ही दिया था. हाँ बहुत ही बुरा था, बहुत ही फनी था. मैं उसमें फर्स्ट ऑडिशन में मैंने कुछ ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, ऐसा जूडो सा बनाया हुआ, तब मैं बहुत छोटी लग रही थी. और पता नहीं मैं एक तो जब मैं शुरू में आई थी आई वाज अ टॉम बॉय और मुझे ऐसा लड़की बना दिया था और मुझे लड़की जैसे डायलॉग बोलने थे तो मैं अपनी आवाज़ जैसे पापा something like that I was telling something to my father and I don't remember exactly what was it, but ऐसा कि कुछ मैं अपने पापा को बोल रही हूँ तो पापा, और मैं अपनी आवाज़ ना और थोड़ा गर्ली टोन में बोलना चाह रही थी और वो आज भी यूट्यूब पे और मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं कैसे बोल रही थी. मतलब आई एम ट्राइंग टू बी सॉफ्ट स्पोकन एंड timid types and which I'm not. So yeah, it was very funny. First audition was for a movie. I don't know क्या था, कहाँ था, पर बहुत सारे लोग थे वहाँ पे. एंड होता है ना जब आप शुरू में होते हो बहुत सारे ऐसे लिस्ट सी आती है और आप कहीं भी चले जाते हो. सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन. First audition was for a Z Music VJ audition जो मैंने दी थी अपनी फ्रेंड अदिता वाही के साथ. और मुझे आज भी याद है वो अंधेरी में वेस्ट में हमने ऑडिशन दी थी. फन रिपब्लिक के पीछे ETC स्टूडियो है वहाँ जाके. और मैं बहुत नर्वस था और मुझे आज भी याद है मैं ऑरेंज पजामाज पहन के गया था ऑडिशन पे. और मुझे प्रोड्यूसर ने बोला था आप पजामा पहन के ऑडिशन देंगे. तो मैंने बोला मेरे को पता नहीं था क्या पहनना है ऑडिशन पे. So that was my first audition. फर्स्ट ऑडिशन मैंने लाइफ का आज के कुछ 3-3.5 साल पहले दिया था फॉर अ साउथ फिल्म जो मैंने की है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है साउथ के अंदर. सो वो मेरा पहला ऑडिशन था. My first audition, wow. Okay, this is going to sound really funny, but it wasn't an audition. It was a photo shoot, and it was for a magazine called Young Mother. I wasn't the mother. I was playing the baby. I was in the second standard, so I think I was about 8 years old. So yeah, that was the first time I faced the camera. My first audition, yes, it was with I was I think 18 that time. It was with Yash Raj and Deepna Kumar, who is the reason, the lady out there who's the reason that I'm actually in this industry, because she saw me performing in Shamak's some of the funks. And I remember her calling me for one of the movies of Yash Raj, but I was too young and I was a dancer that time, so I never thought that I can be an actor. So I remember the team of Yash Raj from the office, they used to Skype me because I was in Delhi, I was not in Bombay, and I've auditioned there. So that was my first audition. And I remember Deepna is like, she's known me from the last 10 years now. And she has really seen me because of her I came to Bombay and I got my first ever show, which didn't came out. That was a ZTV show and it never came though. But thanks Deepna for getting me here and placing me. Thank you. I think that was for India's Best. India's Best contest के लिए मैं पहली बार जब भोपाल में एक कैंपियन स्कूल नाम का एक स्कूल है, मैं वहाँ पर गई थी. मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पे ऑडिशन देना था और मैं ऐसे ही पहुंच गई थी, बस साथ देने के लिए जैसे जाते हैं ना दोस्त, वैसे मैं गई थी. और वो मेरा पहला ऑडिशन था. मुझे मालूम भी नहीं था मुझे करना क्या है. एक्टिंग तो कुछ नहीं आती थी, बस गए, कुछ हाथ में दिया था पढ़ने को और मैंने पढ़ दिया था. दैट्स इट एंड आई गॉट सिलेक्टेड. First audition, my God, my first audition was when I was 19 years old.
मैं सिम्बायोसिस में पढ़ाई कर रही थी डिज़ाइनिंग की एंड जब बालाजी से लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए तब तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ऑडिशन क्या होता है. तब वो सब रैंडमली जब वो लाइंस बोलनी थी सो दैट वाज एन ऑडिशन दैट आई रियलाइज्ड लेटर दैट ओह ये तो ऑडिशन हो गया. I literally gave no audition. I think YouTube is a platform wherein people see if you can sing or if you have the talent, and that's your audition. I mean, people see and if they like it, they call you. My first audition was in GK Delhi में, and where I thought that कि वो लोग घपला है and ये लड़कियों को बुलाते हैं ऑडिशन लेने के लिए, and I went there with my 2 guy friends with hockey sticks to kill them. And अगले दिन की न्यूज़पेपर की मैं उसमें आने चाहती थी फ्रंट पेज पे, but somehow I got in and I saw that an actual audition is going on, and that was my first audition. First audition was, I think I was 19 years old. So I went to pick up my sister. So that guy thought that I should act, and my sister didn't get that. I got it. And वो शाम को ही मैंने ऑडिशन दिया. बहुत नर्वस था, मैं तो कॉलेज में था. मैंने ऑडिशन दिया, I got it. और मुझे पूछा कितने पैसे लेंगे आप. I think कोलगेट का ऐड था. I said 50,000. फ़ोन ही नहीं आया कभी इसके लाइफ में फ़ोन नहीं आया. देन फिर 2013 से आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड फिर काम स्टार्ट कर दिया. My first audition was when I was 6. I auditioned for, I think, some hair oil. Yeah. My first audition was for Tu Ashiki, and it was something very random. I got a text from my friend that यहाँ पे audition हो रहा है for they're looking for new faces in Delhi. So I was like कि ठीक है बना के भेज देते हैं. So I just मैंने फ़ोन रखा अपना वहाँ पे and I just sat in front of it and मैंने बना के भेज दिया. So next day I got a call कि come to Mumbai, we wanna have a mock shoot with you, but it's no guarantee that you're selected. तो अपने expense पे आना, अपनी सब कुछ देख के आना. It's कोई guarantee नहीं है कि आप select हो गए. So I was like, पापा please 2 दिन के लिए जाने दो, मैं आ जाऊँगा वापस. And he was like, ठीक है go. So rest is history. My first audition was the day I landed in Bombay. और जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ था बॉम्बे उसी दिन मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था जो था स्फेयर ऑरिजिन के लिए. कलर्स का शो था और स्फेयर ऑरिजिन एज यू ऑल नो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको और मेरा फर्स्ट डे एक्टिंग का कुछ अता पता नहीं. उन्होंने मुझे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट दे दी. मैं गया ऑडिशन पे और अंदर गया तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और इतनी गंदी बेइज्जती हुई मेरी वहाँ पे. और उन्होंने कहा थैंक यू सो मच. और मुझे इतना बुरा लगा, इतना एम्बैरेस हो गया मैं खुद को देख के कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, मैं इतनी सी स्क्रिप्ट नहीं बोल पा रहा हूँ. एंड फर्स्ट डे वाज रियली बैड एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन जो मुझे निकाला गया था वहाँ से. माय फर्स्ट ऑडिशन वाज फॉर अदाक. इट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट ऑडिशन एंड yeah, I mean, I feel very nice. I was really clumsy. I thought I had a bad audition, and I was very clumsy. And then they told me that's what we needed. I was like, wow, great. I had given ads audition, but like a proper acting audition was this. My first audition, I don't remember the date, but it was for Rajan Shahi's show. It was called ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, and I remember that was the very first time किसी ने मुझसे कहा था lenses पहनने के लिए. Since I already have colored eyes, तो I said lenses पहनने नहीं, black पहनने ताकि उससे आपका चेहरा और मासूम दिखे. And I mean, you know, all my life I'd had people compliment me for my eyes, and suddenly it's like black पहनने, you look even मासूम and innocent. So I said, चलो पहनते. पहली बार लाइफ में lenses देखे थे. This I'm talking some 11 years ago. Yeah. फर्स्ट ऑडिशन वाज मेरे कॉलेज के बाहर वैनिटी वैन थी बालाजी टेलीफिल्म्स की और वो लोग ऑडिशंस ले रहे थे और मैं उस वैनिटी वैन के अंदर जाकर पहला ऑडिशन दिया था मैंने. यार कॉलेज में मैंने ऑडिशन दिया था प्ले के लिए एंड या आई गॉट दैट रोल. Ever audition, I was rejected because I thought I'm too young to shoot for a sari brand. Oh, my first audition. Okay, if we're talking about my very first audition, then it goes really long ago when I was a kid, like really tiny. I probably was
6 or 7 years old. And this is a funny thing. My mum, like now when I tell her, I'm going for shoots, I'm going for this, I'm going for that, she's like, why don't you try a little for business also? You always do business. You have such a nice business mind, and you do so well in studies also. You've done so well when it comes to business and commerce. But when I was a kid, she wanted to make me a full-on model. I don't know why. So this one time there was a chocolate ad. So there were these eclairs, I think, and I had to like throw them in the air and smile like this on the floor, and I was really not into it. Then there was this Surf Excel ad. I remember she had taken me for that, and all the kids were super excited and they were like, yeah, Surf Excel, that was a thing. And I was supposed to come out like that, Surf Excel. And my mom is like, come on, do it. And I was just like, Surf Excel. I purposely didn't do it because I just wasn't interested. But look how the tables have turned now. Now I love all these things, and she's like, why don't you try business? So that was my first